just got done with our lunch. हमने लंच में क्या खाया बेबी? Oh. Good morning. The time is 7:40. I literally dragged myself out of the bed. Hi again. It's 10 a.m. in the morning. I couldn't do it. I slept off and I'm up again. So, yeah. Good morning. It's almost 11 right now. I just got up. आज थोड़ा late हो गया. Actually last 2-3 दिन से थोड़ा सा motivation low है. I don't know. I'm not feeling that great. कभी कभी होता है ना, you have those days when you're feeling like really low for no reason at all. So yesterday and day before yesterday was like that. It was like a very blah day for me. But I have decided that I can't continue this for more days because then it will affect my process. So I slept good today. मैं आराम से उठी हूँ. And I have decided कि आज मैं वापस I'll be back on track. If not today, from tomorrow, because कल से September start हो रहा है. I want to be like back on track. So yeah, I've just got up and I'm gonna start my day with some warm water, and you come with me now. It's 11:45. Whew, had my warm water, got done with my workout. I'm feeling so much better. And also, just because 2 दिन workout नहीं किया, I mean, I could feel the difference कि gap हो गया, like, you know, I think that's why they say that you should not like miss in between. You should be consistent, because just 2 days and I could feel that, you know, I'm not feeling good, not feeling light, I'm feeling bloated. And you know, even आज वर्कआउट करने में जितना ज़्यादा पता चला, अगर कंटिन्यूस में होती तो शायद नहीं पता चलता. बट आई फील ब्रेक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. But now I feel it's not that important. I think I should be consistent, because just 2 days I could see the difference in me, and I just don't want to see that difference ever in my life. I want to be this, if you know what I mean. So it's almost 12:10 and I'm having my pomegranate right now, and later for breakfast I'll be having a bowl of poha. Got done with my workout. It was all about upper body and core workout. It was a combination of upper body and core workout. ब्रेक हो जाता है ना, या इधर या तो आप ब्रेक ले लो या आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करो. सो आपको डिफरेंस दिखता है विथ वॉट यूर डूइंग. पहले आप क्या करते थे और आप क्या करते हो, थकान कितनी हो रही है, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. September has started and I have decided this full month I'm going to dedicate the whole month towards my fitness. I'm going to follow the diet as it is. I'm going to work out. I'm going to work out थोड़ा ज़्यादा खुद की तरफ से, because I only have September and then October is my birthday. So yeah. Post workout I am supposed to have a kiwi, so I'm having a kiwi today instead of pomegranate. I'm having kiwi. It's almost 10:30. I got done with my breakfast. For breakfast today I had 2 toast, 1 egg sandwich. I'll attach a picture somewhere here so that you'll get the idea. And I am having a cappuccino, which I made obviously without sugar. Why I'm having a cappuccino? Because we have a very long day today. अभी के मायरा का स्कूल होना है 11 बजे. उसके बाद we have to go to Myra's doctor for her vaccination. Then I have to go to my doctor for regular checkup. Then we have to also buy गणपति का सामान, because गणपति is coming, and गणपति के just पहले Karan has a work travel, so he won't be here, so we have to do it now. I also have to go to a furniture store because हमारा second dose of vaccination is not done. तो हमको मॉल में एंट्री नहीं मिल रही, तो हमें दूसरी फर्नीचर स्टोर फाइंड करनी है. So a lot of work to do. Hence, good morning everyone, welcome to my channel and a very warm welcome to another vlog. So the time is 8 in the morning. I had my session today but I missed it because कल रात को हम लोग almost 2:30-3 बजे सोए and I just couldn't get up. 8 बजे मेरा session होता है, but I just like got up, so I can't do it. Also I have like a lot of work
to do. September has started. This is the last month that I have with me to do whatever I want to do before my birthday. So yeah, my diet has changed from today. So I'm going to be following the new diet. Yeah. The first thing that I'm supposed to have again is warm water with cinnamon. It's very important that you have your morning drink every day. I think it's pretty helpful. It's 9:30, it's my breakfast time, and for breakfast today I am having, according to my new diet, I'm having a toast and I'm having one egg whole. Actually, I was supposed to have one egg whole, two egg whites, and a cucumber. And pre-workout, I was supposed to have like a multigrain bread. So I didn't had that bread because I didn't do workout today. So I'm having a bread and egg right now. I am minusing the egg whites because I'm taking a toast with it. So it's 10:30 right now. I'm having my cup of coffee because it is needed. Right now we have 11 बजे के मेरा का स्कूल होगा. उसके बाद immediately we have to go out. We have to buy certain things, so we have to go out for that. And गणपति का भी सामान लेना है. Then Karan has an office trip, so उसके लिए भी उसको सामान लेना है. So this is needed. So I'm gonna have this, and I'll see you once we get out of the house. So time is almost 1 o'clock. We have left from the house. We actually have to do a lot of work. We have to buy some formals for Karan. I have to buy a shoe rack. Actually home center से order करना था, but वो time पे delivery नहीं दे रहे हैं, तो हमको practically जाके देखना पड़ेगा. Right now the time is 4 o'clock. We just got done with our lunch. हमने lunch में क्या खाया बेबी? ओह, सुरवे की थाली. We had Surve's mutton thali. If you are from Pune, you would know what Surve is. So we had mutton thali. और actually खाते समय बिल्कुल नहीं सोचा कि इसमें कितनी कैलोरीज होंगी, क्या होगा. Because after 10-20 days, अभी करते करते almost हमको 1 month हो जाएगा. So after 20 to 25 days, you should give yourself this break. You'll feel refreshed. You'll अब इस टाइम पे क्या होता है, जो मोटिव होता है, जो पर्पस होता है, धीरे धीरे कम हो रहा होता है. And then you give yourself this break and you eat whatever you want to, like for only one day, and then you can like get back to your normal routine. That's also very very important. That's what I feel, and that's what I have always done, and that's what I plan on doing. So we enjoyed our lunch a lot. अभी घर जाएंगे, आराम करेंगे, कल से डबल मेहनत करेंगे. है ना? ये कौन सी आइसक्रीम है? Choco chip. I want a choco chip on cone ice cream. तो अब खाना तो कर लिया, अब कुछ मीठा खाने का मन है. तो हम लोग आए Choco chip आइसक्रीम खाने. So right now a lot of people must be thinking that इतनी मेहनत डालने के बाद एक दिन इतना खा लिया, it will be all बर्बाद. But it doesn't work like that. After 20 to 25 days, when you have been following something so strictly, एक ब्रेक सबको लगता है और एक ब्रेक सब डिजर्व भी करते हैं. अब क्या हो रहा था, अभी मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा कम पड़ रहा था, हल्का सा कम पड़ रहा था, और ऐसे लग रहा था बहुत बार बीच में कि कुछ खा लेना चाहिए यार, कुछ खाने का मन कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला. So I thought, why not give myself and Karan like 1 day of break and have whatever we wanted to. आज हम लोग बाहर निकले थे, सुरवेज रास्ते में था, हमने सोचा खा लेते, बिकॉज वी लव सुरवेज का मटन थाली बहुत यम होता है. सो वी हैड इट और हमने अच्छे से खाया. उस टाइम पे हमने नहीं सोचा, और अब हम आइसक्रीम भी खा रहे हैं. बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. खा लो. Kimara, like it? Happy? Kimara is having mango, Kimara is having chocolate chip, I am having roasted almond. Almost 8:30, got done with my workout. Feeling really nice. थोड़े दिन में एक्चुअली 2-3 दिन से ब्रेक हो चुका था. क्यों हुआ था, क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. जस्ट एक्सरसाइज हुई है. फीलिंग वेरी वेरी नाइस. थोड़ा डिफ़िकल्ट था टू गेट अप एंड डू इट बिकॉज ऑब्वियसली ब्रेक हो गया था.
बट नाउ आई एम फीलिंग नाइस. मेरा डाइट भी चेंज हो चुका है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि व्हाट इज़ द न्यू डाइट. बट लेट मी जस्ट. So it's 9:30, it's my breakfast time. For breakfast today I'm having 2 whole wheat bread and 1 egg whole omelette. Actually, according to the diet I'm supposed to have 1 egg whole, 2 egg whites and cucumber, but because pre-workout I had जो bread खाना allowed है, मैंने तब नहीं खाया, so I'm taking right now. सो बिकॉज इस न्यू डाइट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट ऑब्वियसली कल से मैं प्रॉपर फॉलो करूँगी. ऑल्सो मुझे लगता है कि कभी कभी ऑल्टरेशन इज़ फाइन अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी. ना मैंने ऐसा ऑल्टरेशन दैट डजंट मीन कि अगर आपको एग सैंडविच बोला है तो आप वड़ा पाव खा लो, नथिंग लाइक दैट. बट अगर आप हेल्दी वेज में ऑल्टरेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, इट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल. अनटिल जस्ट वन थिंग टू कीप इन माइंड दैट इट शुड बी कम्प्लीटली हेल्दी. सो बेसिकली मैं आपको पहले जो बता रही थी कि क्यों मेरा 2-3 दिन मिस हो गया. द रीज़न इज़ दैट गणपति आ रहे हैं एंड वी वर वेरी बिजी बाइंग थिंग्स एंड हमको बार बार बाहर जाना पड़ रहा था. द रीज़न बीइंग करण हैज़ टू ट्रैवल टू गोवा बिकॉज ही हैज़ अ वर्क इवेंट एंड वो जस्ट आएगा 9th की शाम को या रात को एंड 10th को गणपति बैठ रहे हैं. तो वी वर इन अ जिफी टू कम्प्लीट ऑल द वर्क बिफोर ही लीव्स. मेन पॉइंट कि हम लोग मैं क्यों इतनी बिजी थी या मैं क्यों ब्लॉग नहीं करी. मैंने 2-3 दिन ब्लॉग भी नहीं करे. मैंने ज़्यादा फॉलो करने में भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, वर्कआउट भी थोड़ा मिस हुआ. बट देन दैट दोज थिंग्स वर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. नाउ सितंबर हो गया, स्टार्ट हो गया. ऑलमोस्ट 1 वीक सितंबर का एक्चुअली निकल भी गया. टुडे इज़ 6th of September. So I have 6 September to 6 October, exactly 1 month to do whatever I want to do. 1 month मेरा 9th को complete होगा. Apart from weight loss, I feel very light, I feel very energetic, I feel my body as toned, I can feel it when I wear clothes and everything. I can tell that that's the scene. Now this month also I'm going to focus more on toning my body. Weight कम हो या ना हो, but I am feeling very very good and that was the most important, that is the most important point. वेट तो कम हो ही जाएगा इवेंचुअली, वो तो मुझे करना ही है. बट राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड आई वांट टू मेक श्योर कि जो भी ये हो ये परमानेंट हो. ऐसा ना हो कि मैंने कम करा फिर मैंने छोड़ दिया फिर बढ़ गया. आई एम ओके विथ टेकिंग इट स्लो बट आई वॉन्ट इट टू बी परमानेंट. सो दैट्स द अपडेट दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज. एंड या ब्रेकफास्ट मेरा हो गया. लंच की तैयारी मेरी ऑलमोस्ट हो गई है. अब नाउ इज़ जस्ट मी एंड गर्ल्स, तो लंच डिनर इज़ गोना बी लाइक वेरी वेरी ईजी. ज़्यादा काम भी नहीं है. सो या सो टाइम इज़ ऑलमोस्ट 2:30. लंच टाइम हो चुका है, थोड़ा सा लेट हो गया है बट इट्स फाइन. फॉर लंच टुडे आई एम हैविंग एक्चुअली मेरी डाइट में 70 grams ऑफ राइस बट आई एम हंग्री सो आई एम टेकिंग 100 grams rajma and sauteed vegetable with some soya sauce. That's all for my lunch today. I'll see you in the evening then.